हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ है मिसमैच 2 में नजर आने वाले विहान समत। तो चलिए जानते हैं उनके सफर के बारे में और क्या कुछ कहना है उन्हें मिसमैच सीजन 2 को लेकर। आइए जानते हैं उन्हीं से। सबसे पहले विहान, वेलकम टू आवर चैनल लहरे। Hello, thank you so much for having me. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मिसमैच सीजन 2। आपने रिसेंटली अनाउंस भी किया इस सीजन को लेकर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस वेब सीरीज को लेकर? First of all, I'd like to thank everyone जिसने season 1 देखा है. जी। हमको बहुत प्यार मिला है. We didn't expect that much. We thought we were making a very cool, fun show. और जो प्यार मिला है हमको, it's beyond our dreams. It's done really, really well, and we're so grateful for all of that. So we just hope that season 2 में we've lived up to that expectation, that same love, and we've given you all that and even more. So hopefully we've done our job, and I just want to thank everyone who's seen it and will now see season 2. Please 3-4 बार देख लीजिए, रिपीट पर रख लीजिए आप. जैसे कि सीजन 1 को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, सो सीजन 2 तो अभी अनाउंस कर दिया गया, तो हाउ एक्साइटेड और नर्वस यू आर फॉर मिसमैच सीजन 2? यार दोनों है. आई एम एक्साइटेड बिकॉज अभी मेरा काम आने वाला है बाहर, लाइक समवन विल गेट टू सी इट, बट ऑल्सो इट्स एज आई सेड, एक्सपेक्टेशंस है ना. हमने इतना अच्छा काम किया है सीजन 1 के साथ, तो सीजन 2 भी इतना इतना अच्छा होना चाहिए. So I think all that is there, but I feel from what we've shot, it'll be very good. I think everyone will be very, very happy from what we shot, and it's keeping that original mismatch, like that sweet love kind of vibe, and then taking it to another level of like increasing the stakes and adding new characters and new relationships and new friendships. And we've all obviously also grown as actors. We've had time. शूटिंग के बीच में, मतलब सीजन 1 और सीजन 2 के बीच में शायद 2 साल थे यार, 1.5 साल था. तो आई थिंक वी ऑल हैड टाइम टू मैच्योर एज पीपल एंड एज एक्टर्स एज वेल. सो आई थिंक द परफॉर्मेंसेस आर आल्सो बेटर, and the production value is also better, and the new things that are coming in are very very excited. Can't wait for you guys to see it. सो टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर हर्ष, लास्ट सीजन में भी वही कैरेक्टर था, इस बार उस कैरेक्टर से कितना कुछ अलग होने वाला है और क्या कुछ आपने नए प्रिपरेशंस किए हैं? तो प्रेपरेशंस तो वही थे कि पहले तो एक्सेंट अच्छा आना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज with this a character you have to have that authenticity, because it's very easy to become that traditional, बाहर से आया हुआ, like हाँ। alienating, पता नहीं कौन है, ठीक है, साइड ही वाला है. He's a very important part of the show, and it's very important to do justice to all Americans or NRIs or Indians who have gone there and come back, because they're also like, they don't talk like, hey, what's going on, man? Like, वो ऐसे बात नहीं करते हैं, वो भी इंसान है ना. तो it's very important to do justice to that. So the पहले तो accent था. दूसरा, I think going back to a time when जब आप teenager थे, you were 18 or 19, and समझना कि उस वक्त पे आपके आपके अंदर क्या गुजरता था, क्या गुजरती थी, and understanding a person from that and why he has that reaction. क्योंकि आजकल तो हम मच्योर हो गए, we have an argument, बोलते हैं ठीक है छोड़ दो, बाद में बात करते हैं. बट एज अ टीनेजर यू डोंट लीव इट. आप गुस्सा हो जाते हो, फिर फाइट्स हो जाते हैं. तो दैट वाज प्रिपरेशन आल्सो, एंड देन ऑफ कोर्स डूइंग द सीन्स वेल, एंड जो भी जनरल प्रिपरेशंस हैं, पढ़ो, बार बार पढ़ो, देखो कि क्या इसमें क्या हो रहा है, किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है वगैरह. तो जब अब टीनेजर की बात निकल गई है विहान, तो मुझे यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी आपको कि ऐसी कोई मेमोरी है लाइक जब आप टीनेजर थे, या फिर कोई कॉलेज मेमोरी है यू वुड लाइक टू शेयर टू एवरीवन, जो किसी को नहीं पता है स्पेशली? किसी को नहीं पता. एज अ टीनेजर मैं बहुत ऑकवर्ड था. आई ओके। वुड मुझे एक्चुअली पता भी नहीं चलता जब व्हेन अ गर्ल वुड फ्लर्ट विद मी. तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ बात कर रही है मेरे से, तो मैं भी ऐसे स्माइल करके बात कर रहा हूँ, और कुछ अलग नहीं है. देन आई रियलाइज दैट, अच्छा, 3-4 दिन बाद मैं उठता हूँ नींद से और सोचता हूँ कि यार वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी क्या. फिर अचानक से बत्ती जल जाती है. आई थिंक या दैट्स द मेन थिंग. आई वाज वेरी unassuming as a teenager, and I would not realize cues. मैं बस ऐसे ही बात करते रहता था आधे घंटे के लिए, and then if they get tired also I'd keep talking. So I think that is the main thing about my college years.
सो टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर, विहान और हर्ष में क्या सिमिलैरिटीज है? सिमिलैरिटीज ये हैं कि वो दोनों जानते हैं कि अमेरिका क्या होता है और वहाँ पे कल्चर्स क्या है और लोग कैसे, हाउ दे बिहेव। वो दोनों म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड हैं, पर ऑल्सो एट द कोर उनको, विहान और हर्ष को पहले, मी प्रीवियसली, वी बोथ वांटेड टू बी कूल एंड वी बोथ वांटेड दिस टू फिट इन एंड हैव दिस ऑरा ऑफ लाइक हाँ मैं कूल हूँ, मैं ये हूँ। एंड देन वी बोथ रियलाइज कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। You have to be true to yourself and true to the people around you, and treat everyone with respect and love. And I think Harsh mein that difference comes, that growth comes, um, where he tries to be kinder to everyone and doesn't like to hang out with people who are rude, and really finds a connection, a genuine connection with someone. The rest you'll see in the show. But I think those are the similarities. And actually, I never used to wear jewelry as a just a Vihaan, and the first time I wore like a lot of jewelry was on set as Harsh. And मुझे थोड़ा सा पहले अजीब लगा कि इतना इतने रिंग्स, मतलब 5 रिंग्स, क्या करूंगा इतने रिंग्स के साथ, और उसके ऊपर कान में ये लगा रहे हैं, दे पुटिंग स्टड्स। तो मैंने सोचा यार क्या है, बट देन आफ्टर अ व्हाइल आई लाइक्ड इट, and now in life in general I wear 1 2 rings here and there. It's fun. ये बहुत ही अमेजिंग था। बात करिए अगर बॉन्ड के बारे में, हाउ वाज योर बॉन्ड विद द स्टार कास्ट, स्पेशली विद प्राजक्ता कोली, और उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी थी। शी इज, यार प्राजक्ता के बारे में मैं बात करूंगा ना तो मतलब इंटरव्यू का टाइम ही समाप्त होगा और आई स्टिल बी टॉकिंग, लेकिन क्विकली आई टेल यू। मैं हर दिन सोचता था यार ये कैसे करती है। ये सुबह उठती है समझो 6 बजे, तैयार होके फिर सेट पे जाती है, फिर हम शूट करते हैं पूरा दिन। शूट के बाद समझो मेरे मेरे सीन्स खत्म हो जाते हैं समझो 5 6 बजे, वो उसके बाद भी शूट करी क्योंकि उनके ज्यादा सीन्स है, तो वो खत्म होके वो वापस 8 बजे आ जाती है होटल पे। फिर वो अपना यूट्यूब कंटेंट शूट करती है, हाँ हमारे साथ या अपने साथ। मैंने कुछ वीडियोस में मैंने आई हेल्प्ड हर एज वेल। इट वाज वेरी फन टू सी हाउ शी इंटरेक्ट्स विद एवरीवन एंड शी इज अ प्रो एट इट। फिर वो देन आफ्टर दैट वर्क एंड्स, शी देन हैंग्स आउट विद अस और हमारे साथ थोड़ा सा टाइम बिताती है, एंड वी चैट एंड वी लाफ एंड वी ईट सम फूड, वी गो फॉर डिनर, ये वो, we go to this one's room, that one's room. By the way, our set was very fun, हाँ, मतलब it was like a holiday. ऐसी नहीं है, मतलब it's like some sets are like ठीक है काम पे जा रहे हैं, मरे थके हुए हैं बड़े, but this one is like we're on holiday. Our family members were there. We would party, we would hang out, then we'd shoot also nicely. So it was great. Anyway, so then after shooting on YouTube stuff, she spends time with us, and then she sleeps the last. And हम सोचते थे कि यार ये कैसे करती है, वो बीमार भी नहीं पड़ती है। एवरीवन एल्स वुड बी डाइंग इन द मॉर्निंग, यार इतना थका हुआ हूँ, मुझे और सोना है, और वो एकदम ठीक है, बस बैठ रही है ऐसे। एंड आई वाज ऑलवेज स्टन्ड दैट शी कुड डू ऑल दिस बिकॉज शी हैज द craziest work ethic out of everyone else. She has this insane discipline and obviously passion for what she does, because if she didn't have that, then it's not possible. So I learned a lot from her as well. And I was very, very impressed by everything she does. And I have insane respect for her. एंड बाकी सबके साथ कैसी थी आपकी बॉन्डिंग? बहुत अच्छी थी यार। सबका एक अनोखा ये कैरेक्टर ट्रेट है। तो तारुक आई थिंक लाइक्स टू हैंग आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब जब भी देखो वो दूसरे लोगों के साथ है। ही इज अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, तो ही कैन टॉक, यू कैन टॉक टू अबाउट एनीथिंग। ही इज लाइक अ मास्टर ऑफ वर्किंग आउट एंड टेक्नोलॉजी एंड फिल्म क्रिटिक, सब है, मतलब एक इंसान में सब है। Abhinav though is insane at his discipline when it comes to his workout regime and health and what he eats and कब exercise करता है. He takes stuff to the van also and he's teaching me कि ये band के साथ ये करो. And I was like very nice. Muskan is a beautiful dancer and she's more relaxed, more chill. She likes to just hang out and just chat, very calm. But her dance skills are amazing. Divyani is just very sweet. She's very genuine as a person. तो जब भी आपको कुछ honest answer चाहिए तो आप उनके पास जाइए. Kritika is just a lovely human being.
I spend a lot of nights up late, 2 a.m., 3 o'clock chatting with her. She's very into astrology, not astrology, but astronomy, sorry. So anything about the stars and constellations, she knows. Rohit, of course, Rohit is just energy. After shoot, you come back. He loves having fun. He likes making jokes. He we also like make so much fun of him because we know he's such a big star that we like to poke fun at him, and he takes it with great. He just really takes it well. And और फिर Anuja और Vidya, senior actors, taught us a lot, but they also like to have fun on set. तो उन्होंने इतना काम किया है कि they've realized कि the best thing to do on set is have fun. You have to work with people who are worth working with. You can't waste your time on something you're not happy with. शूटिंग के दौरान ऐसी कोई मेमोरीज या फिर कोई ऐसा मोमेंट है जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो वो लाइफ टाइम वो एक पार्ट ऑफ एक लाइक मेमोरेबल मूवमेंट है, ऐसा कुछ रहा हो? यार एक दिन थी जहाँ पे हमको शूट करना था, फिर बारिश हो गई और हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि सीन तो मतलब इज नॉट रेनिंग इन द सीन, और हमारा आउटडोर शूट था। तो ओके। एक हमारा एक सेट, वी वर एट अ स्कूल लाइक कॉलेज देयर आई बिलीव, मयूर चौपासनी स्कूल वी वर शूटिंग एट। तो हमारे वैन्स वगैरह सब एक साथ ही थे एक फील्ड में। तो बारिश हो गई और हमने बोला कि भाई कैसे करेंगे। तो हमारे डायरेक्टर आकाश ने बोला कि ठीक है छोड़ दो, हम हम धूप का इंतजार कर लेंगे, इन द मीन टाइम थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। तो हमको सब चाय मिला, and we started we from the makeup van had the loudest speakers, okay, so we opened the door of the makeup van and we started playing music loudly. So everyone started chatting and sitting around, and then what happened was there was a cricket bat and a cricket ball. ओके। तो एक गेम शुरू हो गया। And ग्रेट। on आप देखने जाओ तो मतलब लेफ्ट पे there were already 10 people ready in different fielding positions, and they are already started playing cricket. एंड इट वाज रेनिंग। It was drizzling. So now in the span of like 5 minutes, म्यूजिक है, चाय है, क्रिकेट मैच चल रहा है और लोगों बातों बातों में मतलब अपना ये कर रहे हैं, एंड वी वाज जस्ट सो familiar and wholesome because it was the first time ki that our entire set was just together hanging out on set, you know, and it's kind of that acceptance ki chalo shoot to nahi kar sakte to maza kar lete hain na. And it was just so beautiful, and I just remember that moment because all the actors were there and finally we felt थोड़ा सा relaxed क्योंकि हमको लगा कि यार अभी वो गर्मी में बैठना पड़ेगा क्लासरूम में और दिखाना पड़ेगा कि हम पढ़ रहे हैं, और अब हमारे पास we had like sweaters and all that we were wearing like knits and we were sweating, but this was like finally the rain came and it was cool and we were just hanging out and we just chatted. It was great. I have pictures also of that day. I think I'll post it on Instagram. वाओ। सो ओके। Oh, सो I'm also अभी sorry. I आजकल want to ऐसा। add, Ranvijay या। took me on a ride on a bike also. वाओ। In that time, he just found a bike, took me on a ride, and he sped. And I was like, "Kya ho raha hai? Kya ho raha hai?" And he's like, "Don't worry." And he came back and he told me about his love for bikes also. So anyway, sorry, go on. सो आजकल एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी वेब सीरीज आ रही है, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, लाइक पीपल आर प्रेफरिंग वेब सीरीज मोर देन मूवीज, बिकॉज मूवीज आजकल मतलब ऑडियंस को इतना ज्यादा कुछ खास खुश नहीं कर पाए। तो व्हाट यू वुड लाइक टू से अबाउट इट? See, I think what OTT does is that it gives a backing and a voice to people who want to tell authentic stories that may not have worked in films or may not be funded in films. So, what it also does is that it allows people like you and me, the consumer, to be directly connected with the people telling the story. So, उन उसमें benefits हैं because people can directly see what they want to and people can directly make what they want to. ठीक है? There's no pressure of necessarily box office में कितना वापस मिलेगा या कितना बनाएगा, because the subscribers are there and the backing is there. So I think at the fundamental level, अगर पिक्चर अच्छी है तो चलेगी, अगर नहीं है तो नहीं चलेगी. And I think if we have movies that are not working, we cannot blame ये है या वो है, पिक्चर अच्छी नहीं थी, एक दूसरा बनाओ, try harder next time. And of course there are trends in the industry, there are certain things doing better than others, but that doesn't mean if you release a certain film that's like
a social film, it will not work at all. I think there's a way to do things. And of course, OTT has allowed stories that are not like pura spectacle, like Dhoom Dham, dance, vagera. It's Mhm. allowed that to come to a smaller screen and be, directly. So then there's maybe more competition. But that doesn't mean that pictures are not working, I feel like personally. वैसे आजकल जितनी भी मूवीज आ रही है सबको बॉयकॉट करने का ट्रेंड भी चल गया है, लाइक चाहे वो ए लिस्ट स्टार्स की क्यों ना हो या फिर बड़ी हो, बिग बजट हो, लो बजट मूवी हो, कोई भी मूवी आ रही है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे वो बॉयकॉट करने का एक ट्रेंड ही चालू हो गया है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मुझे एक्चुअली इसके बारे में इतना पता नहीं है। मुझे पता है कि ट्रेंड हो रहा है, लेकिन कितना इम्पैक्ट हो रहा है मुझे पता नहीं है। लोगों ने कहा कि ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करेंगे, लेकिन इतना बना रहा है बॉक्स ऑफिस पे। मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि ट्रेंड में इतने लोग कौन है या क्या हो रहा है। बट आई विल से दैट इट्स जिंदगी में ये सब चीज होते रहते हैं, and you have to make the best of it. I think it's see, if you go watch a film, watch it because you like it, and if you don't like it, don't watch it. But लोग गुस्से हो जाते हैं यार, पता नहीं क्यों, लेकिन उनके reasons हैं. um, I think that this boycott trend will not personally last long, in my opinion, because everyone loves movies और सबको पिक्चर देखनी है। तो अगर आप पिक्चर्स को ही बॉयकॉट करेंगे तो क्या देखोगे? तो yeah, hota hai. I think it's I mean it's not nice obviously, but it's the way of things and it will go away. तो क्या आपने अभी तक ब्रह्मास्त्र देखी? हाँ, मैंने देखी है। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। VFX was very nice and it's a step forward in a kind of storytelling in India, because हमने अभी तक ऐसी फिल्म नहीं बनाई है, क्योंकि पहले तो बजट इतनी बड़ी है और फिर बैकिंग भी चाहिए, और so I'm really happy that a film like that has come, and I'm really happy it's doing well. We'll see the lifetime. अभी देखेंगे कितना है, but I hope they make part 2. Hopefully, I just hope everyone keeps working. यार, I'm Yes. not jealous that way. सो आफ्टर मिसमैच आप कब वापस से ऑडियंस को दिखाई देने वाले, क्या कुछ है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्या कुछ है आपके? हाँ, एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में एक्चुअली बात नहीं कर सकता, मुझे ओके। अलाउड नहीं है ये सब बताने के लिए, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि एक अलग सा प्रोजेक्ट है जहाँ पे यू विल सी मी इन समथिंग दैट यू हैवंट सीन मी इन बिफोर। इट्स अ वेरी डिफरेंट विहान व्हिच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। मैं एक हफ्ते में जाने वाला हूँ मुंबई से, शूटिंग इन अ डिफरेंट लोकेशन, तो आई हैव टू फ्लाई आउट। तो आई एम लकी दैट वी कैन डू दिस इंटरव्यू टुडे। And it's a web series, it's not a film. But it's a very, very good script written by some very, very talented people who are friends of mine also. And it's with some very recognizable faces, let's just say that. उसके ऊपर मैं बता नहीं सकता क्योंकि उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, and it's a reputed production house. कूल, सो कांग्रेचुलेशंस। Thank you. विहान, आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, थिएटर्स में भी करते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? हाँ, मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एक्टर्स टू डू थिएटर। इट्स अ वेरी it grounds you a bit, it puts that base amount of work into being an actor, and it really tests your skills, and I think it's very important that everyone should do it. लेकिन सबका अपना चॉइस है। मेरा चॉइस ये था कि मुझे थिएटर करना है, पढ़ना है, और फिर मुंबई में आके आई बिन लकी इनफ टू परफॉर्म एट पृथ्वी, because Akash, the director of Mismatched, also has a theater group at Prithvi, who does a lot of work at Prithvi. So I've been very lucky. I'm very happy. Kabhi, if anyone watching is in Mumbai, sometimes just keep a lookout for all our Mumbai shows. You'll get to see me in a play. And I really hope that theater as an art form sustains. लोग जब टीवी आया था तो लोग कहते थे कि थिएटर चले जाएगा, अरे कौन देखेगा, अभी सब घर पे बैठ बैठ के देखेंगे, और and thankfully that's not happened, and theater is still a very alive and vivid art form, and I think it's very important that people support it. That's all. सो जाते जाते आप अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको? I just hope we live up to your expectations. हमने बहुत काम किया, हमने भी वेट किया है, सब वेट ही कर रहे हैं, लेकिन आई होप what you see matches up to what you hope for. And anytime you feel anything, just send me a comment on Instagram and send me a message. मैं पढ़ लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ. And yeah, I'm really excited for you guys to see it. So all the very best, Vihaan, and congratulations for your upcoming projects too. Thank Thank you. you so much. Thank you so much. Bye bye. Bye.